ठीक है. If an emitter current is being changed by 4 milliampere, the collector current changes by 3.5 milliampere. The value of beta पूछा. IE की वैल्यू दे रखा है, IC की वैल्यू दे रखा है. तो I am taking right now alpha value because IE IC will give me the value of what? Alpha. Alpha मतलब common base amplifier. So alpha value is IC by IE 3.5 divided by 4 is 7 by 8. Now he is asking the problem beta. Beta value means what? Common emitter amplifier में beta की value निकालना है. So beta value will be equal to your alpha divided by 1 minus alpha. That is 7 by 8 divided by 1 minus 7 by 8. तो कितना आ रहा देख लीजिए beta कोई बोल देगा आंसर. Anyone can give me the answer for this one? कितना आ रहा बेटा? Anyone? आया? कितना आ रहा बेटा? वन बाई एट कैंसिल हो जाएगा 7. So this will be equal to 7. क्लियर है? बीटा की वैल्यू कितनी आ रही? 7 आ गया. चलो वन मोर क्वेश्चन. A transistor is connected in common emitter circuit. Common emitter circuit configuration. कौन सा बेटा ये? कॉमन एमिटर है. ठीक है ना. The collector supply voltage. The collector voltage कितना है? 10 volts. And voltage drop across resistor of 1000 ohms in collector circuit is 0.6 volt. If current gain factor beta is 24 beta, then base current is अच्छा वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए. A transistor is being connected in your common emitter circuit configuration beta. Common emitter configuration. ठीक है. कलेक्टर वोल्टेज मतलब बेटा आउटपुट ना. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर ऑफ कलेक्टर यानी ये आउटपुट रेसिस्टेंस है. The current gain factor beta is 24. The base current is how much? यानी resistance across your collector is given as of your 1000 ohms. यानी output load resistance. Voltage drop across the resistance यानी delta V is given how much for me? 0.6 volt. Current gain beta value is given how much for me? 24. We know that beta value will be equal to how much beta? IC divided by IB, isn't it? So this is 24 is equals to your IC divided by your IB. This is my equation number 1. So current gain will be equal to how much beta? IC will be equal to how much? IC is equals to your output voltage divided by your output resistance. So delta V is given as 0.6, RC value is given as of your 1000. So that will be equal to how much beta? 0.6 मतलब 6 by 10. 10 मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 4 ऊपर चले जाएगा तो 6 into 10 to the power of -4. This is my equation number 2.
ठीक है ना. I got the value of your IC and I got the value of the equation right now. Is asking the base current. तो इस above equation से मैं base current निकाल सकता हूँ कि नहीं. यहाँ देखो बेटा, from 1 and 2, from 1 and 2. So 24 is equals to IC की value 6 into 10 to the power of minus 4 divided by base current. So base current निकालो. So base current will be equal to 6 into 10 to the power of minus 4 divided by 24. कितना आ रहा है देखो बेटा, ये 10 to the power of minus 4 है ना. So this will be equal to कितना आ रहा, 6 divided by 24 into 10,000. सिंप्लीफाई करो. कितना आ रहा है बेटा, कोई तो भी आंसर दो यार. ऑनलाइन में रहे सवाल. कितना आ रहा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24. 1/4 value is how much? आ गया बेटा. डन, बोलो जल्दी. 1/4 कितना होता है, 0.25 into 10 power minus 4. That means this will come out for me how much? तो 25 ये 2 चले जाएगा तो 25 into 10 to the power of minus 6 यानी 25 माइक्रो एम्पियर्स. गुड क्वेश्चन बेटा. आ गया सभी को, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. In common base mode of a transistor, the collector current is 5.488 milliamperes for an emitter current of 5.60 milliamperes. रब बुक लेके करते रहिए बेटा. The value of the base current कितना होगा, the value of base current amplification factor, यानी बीटा will be how much. चलिए करिए. I'm giving the options. First option is 49, second option is 50, third option is 51, fourth option is 48. चलो करके बताइए. कॉमन बेस मोड ट्रांजिस्टर है बेटा. कॉमन बेस मतलब बीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू योर कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय योर बेस करंट. और अपने को इक्वेशन मालूम है, एमिटर करंट विल बी इक्वल टू योर कलेक्टर करंट प्लस ऑफ योर बेस करंट. ठीक है ना. So therefore beta can be written as right now. Therefore beta is equals to collector current divided by, यहाँ पर IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, IE minus of your IC. Second right here IE minus of your IC. ठीक है ना. IC की वैल्यू कितनी दे रखा है, 5.488 divided by
This one is 5.60 minus 5.488. इसको simplify कर लो. This will give me the answer. 49. Very good. 49 is the answer. Clear है? चलो next question. वो फॉर्मूले बेस्ड ही है बेटा, थोड़ा अच्छा सा से प्रैक्टिस कर लोगे ना. सेमीकंडक्टर्स में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, नहीं 3 4 से 12 मार्क्स. नेक्स्ट वन. If the ratio of the concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7/5. Very good question beta, try करिए कोई. And the ratio of the currents is 7/4. Then what is the ratio of their drift velocities? What is the ratio of their drift velocities? फॉर्मूला याद है किसी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का v ना, अभी बोला था मैंने आपको, isn't it? I is equals to your v ना. Drift velocity, charge of electron, number of n is number of your electrons present in that one into your area. तो यहाँ पर हम लोग electrons के लिए और holes के लिए लिख रहे हैं. देखो, concentration of electrons to that of the holes is 7/5 and the ratio of the current is given as 7/4. ठीक है, ratio of concentration of your electrons, isn't it? So if I'm writing for this relation right now, I is equals to number of your electrons into A into your drift velocity. और A के लिए holes, ये electron के लिए लिख रहा हूँ, और holes के लिए अगर लिख रहा हूँ तो number of your holes H into your A into your drift velocity due to the holes, और ये drift velocity is due to the electrons. इन दोनों का relation given यहाँ पर number of electron divided by NH. This is given as 7/5. Concentration बोला ना, ratio of concentration of electrons. और electronic current divided by whole current is given as 7/4. So therefore ये इसमें डाल दीजिए बेटा, IE divided by your I of your holes is equals to NE divided by NH into area तो cancel हो जाएगा, drift velocity of electrons divided by drift velocity of your holes. ठीक है. What is the ratio of the drift velocities पूछा प्रॉब्लम में, यानी VDE. तो VDE निकालना मतलब NE by NH कितना दे रखा है 7/4, NE by NH कितना दे रखा है 7/5 into VDE of your electrons divided by drift velocity of your holes. अब बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 5/4. वेरी गुड. सो अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, drift velocity of your electrons divided by your drift velocity of your holes, ये कितना बन रहा है बेटा? 5/7 into your 7/4. 7 कट गया, 5/4. वेरी गुड. आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर है बेटा? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग पक्का बोलना. हाफ वेव फुल रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आइडिया है ना? इन ये full wave rectifier circuit, in a full wave rectifier circuit operating from 50 Hz, यानी इनपुट दे रखा है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 Hz मेन सप्लाई, मेन फ्रीक्वेंसी मतलब इनपुट. अब पूछ रहा क्या यहाँ पर देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी in the ripple, the fundamental frequency in the ripple would be how much? Options given are 50 Hz, second option is given as 25 Hz,
Third option is given as 100 hertz. Fourth option is given as 70.7 hertz. मैंने क्लास में पढ़ाते खुद ही बोला था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अगर इनपुट n है तो आउटपुट भी n होगा. फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर इनपुट n है तो आउटपुट 2n होगा क्योंकि दोनों डायोड्स भी रीड करेंगे ना बेटा. तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया. फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1/50 है. पर फुल वेव रेक्टिफायर कितना हो जाएगा बेटा. पर फुल वेव rectifier is asking what fundamental frequency only, yani f dash will be equal to 2 times of f, that is 2 into your 50, 2 5s are 10, that means 100. So 100 hertz will be the answer. चार्ट बॉक्स में आंसर दे दिया रहना चाहिए था तब तक बिल्कुल. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट वाला. देखिए बेटा, the circuit has two oppositely connected ideal diodes in parallel. The question is, what is the current flowing? What is the current flowing in circuit? This is a given diagram. यहाँ पर एक resistance है और यहाँ पर एक diode है इस तरह से, और यहाँ पर एक resistance और इनपुट वोल्टेज है पॉजिटिव कनेक्टेड या नेगेटिव कनेक्टेड. यहाँ पर ऐसा इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस है 3 ohms. दिस इज योर डायोड D1. इसका रेजिस्टेंस है 4 ohms और इनपुट वोल्टेज है 12 volts. और यहाँ पर एक डायोड है इस तरह से और इसके पास एक रेजिस्टेंस है इस तरह से. दिस वन इज योर 2 ohms एंड दिस इज योर डायोड D2. चलो बताइए कोई. ऑप्शंस गिवन आर 1.71 एम्पियर, 2.00 एम्पियर, आप लोग शुरू कर लो. 2.31 एम्पियर, फोर्थ वन इज 1.33 एम्पियर. चलिए बताइए. सर्क्यूट हैज टू ऑपोजिटली, कौन सा फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस. नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये हो गया रिवर्स बायस. पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस वन इज फॉरवर्ड बायस. तो अगर इसका सर्क्यूट में ड्रॉ करूं, फाइनल सर्क्यूट कैसा बनेगा बेटा. एक रेजिस्टेंस आएगा ऐसा, ये डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा. दिस इज 2 ohms, दिस इज योर 4 ohms, दिस इज योर 12 volt. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. इसमें करंट, दिस टू आर इन विच कॉम्बिनेशन बेटा. 4 ohm and 2 ohm आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी 4 + 2 that will be equal to 6. So I is equals to V by R. V की वैल्यू 12 by 6, 6 1s are 6 2s are, so that will be equal to 200 ampere. So this will be the answer. Or you can do by the Kirchhoff law also, by Kirchhoff's voltage law. So apply the KVL, closed loop है ना. So if I am applying the KVL, यहाँ से जा रहे हैं where I am ending, so it is -12 plus 4 times of your current I. Some current I is going in this one, isn't it? The same direction right now. This one will be equal to plus 2I. That must be equal to 0. So I will be obviously 12 divided by 6. Think if this one is right now 6. So this will be equal to your 2 amperes. ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है ना. कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर. इज इट क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. और 3 मिनट ही बाकी है बेटा, वरना फिर आईडिया क्लोज हो जाती. आज मैं आप लोग को एक असाइनमेंट भेजता हूँ सेमीकंडक्टर्स को, आप लोग एक बार कर दीजिए उसको पूरा. ठीक है ना. चलिए. The electrical conductivity of a semiconductor increases
when electromagnetic radiation when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. शुरू करवा रहा हूँ, 2 मिनट है, देखो यहाँ पर 2 मिनट है. ओके, क्वेश्चन है the band gap in electron volt for semiconductor is. पहले डाटा देखो क्या क्या दे रखा है आपको. Electrical conductivity of the semiconductor, electrical conductivity of your semiconductor of electromagnetic when increases when the electromagnetic radiation of wavelength shorter than, यानी wavelength दे रखा है 2480 नैनोमीटर is incident. तो बैंड गैप पूछ रहा है. बैंड गैप मतलब क्या बेटा? energy gap will be equal to your h into nu, or else I can write this one as of your hc by your lambda. ठीक है ना? वेवलेंथ नैनोमीटर्स में, तो hc की वैल्यू कितना लोगे? 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2480 नैनोमीटर्स. तो ये हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. आंसर विल बी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देख लीजिए, ये 0 चले गया. सो इट इज 124 डिवाइडेड बाय 248. देख लीजिए कितना आ रहा. कितना आ रहा देख लीजिए. 124 डिवाइडेड बाय 248. कितना आ रहा? 124 1s 124 2s 2 4s 8 2 2s 4 2 1s 2 248. So 1s 2s यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1/2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना आसान था नहीं? एनर्जी बैंड अगर पूछा तो. क्लियर है? एलईडीज एक बार आप लोग पढ़िए बेटा. एनसीईआरटी निकाल के एक बार एलईडी पढ़िए. अगर समझ में नहीं आ रहा तो यू लेट मी नो, आई विल टेल यू. ठीक है. सेमीकंडक्टर में 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा. लॉजिक गेट में से एक, देखो सेमीकंडक्टर में से सेमीकंडक्टर प्लस लॉजिक गेट्स मिला के 3 क्वेश्चन है. पूरा मॉडर्न फिजिक्स से अपने को 5 क्वेश्चंस. ठीक है. यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लीजिए. यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कितने होते हैं बेटा? 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं 2 भी ले लिया यहाँ पर तो पूरे 10 क्वेश्चंस हो गए. यानी 10 into 4 मतलब 40 मार्क्स. 40 मार्क्स आप मिनिमम वर्क करें तो आपको 40 मार्क्स आ जा रहे हैं. 40 मार्क्स सिर्फ ये 2 चैप्टर 3 चैप्टर से आ रहे हैं. आप लोग प्लान करके इसके हिसाब से पढ़िए बेटा. मॉडर्न फिजिक्स तो मैंने पूरे डिटेल में करा दिया. लॉजिक गेट्स में थोड़ा